Everyone, welcome to economics class. Today we will start our seventh chapter, that is production functions, short run as well as long run. Dear students, what is production? Production refers to a process of converting inputs into output. That's why what we can conclude that production of a commodity depends on factors of production like land, labor, capital and entrepreneur. Land is assumed to be a silent factor, then entrepreneur is the producer himself. That's why broadly we can say that production of a commodity depends on labor as well as capital. Let's start discussing about the topic. What is production function? The functional relationship between physical inputs or factors of production and output is called production function. Whenever the term function is there, the definition will start from functional relationship. So, what is production function? The functional relationship between physical inputs. Physical inputs means that are in terms of physical, means they are in terms of physical form, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हैं हमारे फिजिकल इनपुट्स. इनपुट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल और द मशीनरी, जिनको यूज़ करके हम फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. इट इज़ एज्यूम्ड that inputs as the explanatory or independent variable and output as the dependent variable. It means output जो है वो input पर depend कर रहा है. अगर हम inputs use नहीं करेंगे तो हम output produce नहीं कर पाएंगे. Mathematically we write this as Q is a function of L and K. Q means the quantum, the output, L means the labor and K means the capital. So we can say that output depends on two factors. One is labor and second is capital. Actually, there are four factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Land is assumed to be a silent factor and entrepreneur is the producer himself. That's why broadly we can say that output or production depends on two factors. One is the labor and second is the capital. Got the point? Now note that there may be many other factors as well, but we have assumed two factor inputs here. अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ लेबर और कैपिटल पर ही प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, और भी फैक्टर्स होती हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को थोड़ा लिमिट कर देंगे और हम दो ही फैक्टर्स को स्टडी करेंगे. वन इज़ द लेबर एंड सेकेंड इज़ द कैपिटल. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स? वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? दैट वेरीज, जो बदलता रहता है. सो दोज इनपुट्स दैट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स. These are the factors that can be changed. Variable factor exist in both the short run and the long run. Example of variable factors include daily wage, labor, raw material, etc. अगर काम कम है तो कम वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे दी. अगर ज़्यादा वर्कर्स हैं, अगर काम ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्कर्स को कॉल कर लिया. मीन्स ये कैसे फैक्टर्स है? जो वेरिएबल फैक्टर्स है. अगर एक फैक्ट्री है उसमें आज काम कम है तो कम वर्कर्स को काम पर बुला लिया. अगर काम ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्कर्स को काम पर बुला लिया. मीन्स दीज आर द वेरिएबल फैक्टर्स. नेक्स्ट, what are the fixed factors? On the other hand, those factors that cannot be varied or changed as the output changes are called fixed factors. These factors are normally characteristics of the short run or short period of time only. Fixed factors do not exist in the long period. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. फिक्सिटी का मतलब क्या है? जो बदल नहीं रहे. सपोज करिए कि एक फर्म ने प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया, उसने एक गोडाउन को रेंट पर लिया. ये गोडाउन उसका फिक्स फैक्टर है, चाहे वो इस पे प्रोडक्शन करे या ना करे, लेकिन उसको उस गोडाउन का रेंट पे करना ही पड़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो वर्कर्स को ज़्यादा यूज़ कर सकता है,
लेकिन वो बार बार गो डाउन नहीं ले पाएगा। सो हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि जो फैक्टर्स प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर, और जो प्रोडक्शन के साथ साथ नहीं वेरी कर सकते या चेंज नहीं होते उनको हम कहते हैं फिक्स फैक्टर। लेकिन बच्चे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फिक्सिटी है, जो लिमिटेशन ऑफ फिक्सिटी है, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही होती है। शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सभी को ही चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मैं अपने कैंटीन वाले की हम एग्ज़ाम्पल दें तो अब तो स्कूल ऑफ है तो कैंटीन का आपको नहीं पता, लेकिन जो अपना कैंटीन ऑनर है वो कैंटीन ऑनर को अगर हमने ऑर्डर प्लेस किया, सपोज़ करिए कि मेरा बर्थडे है और मैंने उसको ब्रेड रोल्स का ऑर्डर प्लेस किया, तो मैंने उसको 50 ब्रेड रोल्स के लिए बोला, वो बड़ी आसानी से मुझे तैयार करके दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, ब्रेड ज़्यादा खरीद लेगा, पोटैटोज़ ज़्यादा खरीद लेगा और मुझे दे देगा। सपोज़ करिए कि मैंने पूरे स्कूल के बच्चों के लिए ऑर्डर प्लेस किया, तो वो क्या करेगा, या तो मुझे हाँ नहीं भरेगा कि मैं आपको 2000 या 2200 ब्रेड रोल नहीं दे सकता। अगर मैंने उसको कंपेल किया ही है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन के लिए एक कढ़ाई और ले लेगा, 3-4 वर्कर्स और रख लेगा, ताकि 3-4 वर्कर्स उस दिन के लिए रखेगा, क्योंकि हर रोज़ तो उसको 2200 ब्रेड रोल्स बनाने नहीं है। अगर मैं उसको कहूँ कि मुझे पूरे फतेहाबाद के बच्चों को ब्रेड रोल खिलाना है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज इन शॉर्ट पीरियड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कैंटीन ऑनर टू इंक्रीज द स्केल। वो नहीं कर सकता। तो जो शॉर्ट पीरियड होता है वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं लेकिन कुछ फिक्स्ड रह जाते हैं। गॉट द कॉन्सेप्ट? चलिए आगे चलें। Now, consequently, we can define two production functions. One is the short run and second is the long run. The short run production function defines the relationship between one variable factor keeping all other factors fixed. हमारे पास दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लेकर चल रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल. सो ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड द ओनली वेरिएबल फैक्टर इज लेबर एंड द सेकेंड वन कैपिटल इज assumed टू बी फिक्स. अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट पीरियड इज अ टाइम पीरियड वेयर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड. हमारे क्वेश्चन में हम सिर्फ दो ही फैक्टर्स को लेकर चल रहे हैं. सो ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर एंड कैपिटल विल बी द फिक्स्ड फैक्टर. The law of returns to a factor explains such a production function. हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी that will be for the law of returns to a factor. Now move to the next short run production function. For example, consider that a firm has 20 units of labor and 6 acres of land and it initially uses 1 unit of labor only on its land. So what is the ratio? 6:1. 6 क्या है? 6 यूनिट्स ऑफ लैंड, हम यहाँ कैपिटल भी ले सकते थे, एंड 1 हम इसको कैपिटल ही ले लेते हैं, इट विल मेक अ कन्फ्यूजन. सो इंस्टेड ऑफ लैंड लेट इट बी कैपिटल. सो द रेशियो इज capital labor ratio is 6:1. Now, if the firm chooses to employ 2 units of labor, then the capital labor ratio will become 6:2, that is 3:1. So, dear students, what you are to learn from this very paragraph, from this very example, that factor ratio varies in short period. Short period में क्योंकि एक फैक्टर आपका फिक्स्ड है, दूसरे फैक्टर को हमें ज़्यादा एम्प्लॉय करना है, तो रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन फैक्टर रेशो. सो फैक्टर रेशो वेरीज. हम यहाँ ये कह सकते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड द फैक्टर रेशो इज वेरिएबल, और यू कैन से फैक्टर रेशो इज ऑफ वेरिएबल proportion type. Means the production function is of variable proportion type. What is variable proportion type? The ratio between the inputs varies with the change in output. It can also be explained with the help of a diagram. This is the diagram. What does this diagram shows? That OK units of capital are assumed to be constant, and for increase in production earlier OL1 units of labor are used, then OL2 units of labor are used,
इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, OL3 भी किया जा सकता है, रेशो चेंज होती जाएगी। अगर मैं इसको पहले 1 और 1 ले लूँ तो इनिशियल रेशो इज़ 1:1, फिर मेरी बन जाएगी 1:2, फिर मेरी बन जाएगी 1:3। मीन्स द input ratio varies. So production function that exists in short period is of variable proportion type. Clear beta? This is variable proportions type. The production function that prevails or that exists in short period is variable proportion types. It is because the factor or input ratio varies with the change in output. Now, long run production function. The long run production function is different in concept from the short run production function. Here, all factors are varied in the same proportion. The law that is used to explain this is called the law of returns to scale. This is not a part of our syllabus, so हम इसको नहीं करेंगे. It measures by how much proportion the output changes when inputs are changed proportionately. हमें ये लॉ नहीं करना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट पीरियड में हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब एक फैक्टर की वजह से, और रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है जब पूरा का पूरा प्रोडक्शन यूनिट चेंज हो जाए. अभी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट पीरियड में हम नया गोडाउन नहीं खरीद पा रहे, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हम नया गोडाउन भी खरीद लेंगे. मीन्स अगर डिमांड बढ़ रही है, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वो हर वर्कर को के साथ साथ नई मशीन भी खरीदेगा. मीन्स इन लॉन्ग पीरियड देयर इज नो फिक्सिटी एट ऑल. नाउ this is the diagram. It indicates that earlier 1 unit of capital and 1 unit of labor, then 2 units of capital and 2 units of labor. The ratio earlier is 1:1, then 2:2. 2:2 can also be written as 1:1. अगर और बढ़ाना है तो 3:3. 3:3 means again 1:1. So what we can say, the production function is of constant proportions type because of constant factor ratio. Input ratio remains constant, that's why the production function that prevails in long period is constant proportions type. ध्यान रखना, शॉर्ट पीरियड में है वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप, लॉन्ग पीरियड में है कांस्टेंट proportions type. Now move to the next. This is the basic difference between short run production function and long run production function. The very first one, short run production function alludes to the time period in which at least one factor of production is fixed, while the long run production function connotes the time period in which all the factors of production are variable. यहाँ पर टाइम पीरियड का बैन है, मतलब टाइम पीरियड यहाँ पर ऐसा है कि सभी फैक्टर्स वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ऑल द फैक्टर्स विल बी वेरिएबल. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और रिटर्न्स टू अ फैक्टर. द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इसको हम रिटर्न्स टू स्केल ही कहते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कहेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू अ फैक्टर. स्केल ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन. स्केल का मतलब अगर एक हमारा गोडाउन है तो हम छोटे लेवल पर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेम्परेरीली हम प्रोडक्शन को ज़्यादा कर पाते हैं. जैसे मैंने आपको कैंटीन का ऑनर दिया, कैंटीन का एग्जांपल दिया. while in case of long period change in scale of production, then factor ratio changes. अभी हमने डिस्कस किया वेरिएबल होता है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप भी कहते हैं. लॉन्ग पीरियड में फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होता, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शंस टाइप भी कहते हैं. गॉट द कॉन्सेप्ट? मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज अगेन definition of total, marginal and average production. Dear students, as we have already discussed that there are two factors of production, one is variable and second is fixed. So what is total production? Total production refers to the sum total of output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount of the fixed factors used in the process of production. ये तो हम डिस्कस करके आए हैं कि प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल फैक्टर और कांस्टेंट फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है. तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं
कि अगर हम मान लें कि 1 यूनिट ऑफ कैपिटल है और 6 वर्कर्स हैं, पहले हमने एक वर्कर एम्प्लॉय किया तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, दूसरा वर्कर एम्प्लॉय किया तो 12 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, थर्ड वर्कर 15 यूनिट्स, फोर्थ वर्कर 12 यूनिट्स, फिफ्थ वर्कर 10 यूनिट्स and sixth worker 6 units. Then the total production will be the sum total of all these additional units of output. जो 6 के 6 वर्कर्स ने एडिशनल, पहले ने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए, दूसरे ने 12, तीसरे ने 15, चौथे ने 12, फिफ्थ 10 and sixth 6 units. So sum total is 65 units. That's why what is total production? Total production refers to the sum total of output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount of the fixed factor. Total production is also called total returns of a variable factor because the fixed factor remains constant, वो तो बदल नहीं रहा, तो जो भी चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वेरिएबल फैक्टर की वजह से. इसीलिए हम क्या कहेंगे? टोटल प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर. Got it, beta? Move to the next point. This is the marginal product. The additional output produced as a result of employing an additional unit of the variable factor input is called the marginal product. अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर से टोटल प्रोडक्शन आया था मेरा 100 यूनिट्स, क्लियर? जब मैंने सेकेंड लिया तो टोटल प्रोडक्शन हो गया मेरा 120. What is the change in total due to employment of one additional unit? This is 20. So marginal marginal production refers to the additional output produced as a result of employing an additional unit of the variable factor input is called the marginal product. Thus we can say that marginal product is the addition to total product when an extra factor input is used. And what is the formula? Change in output by change in input. Means what is MP? MP means delta TP by delta L. Delta TP means change in total production divided by change in variable factor. Now, thus it can also be said that total product is a summation of marginal product. अपनी मेमोरी को रिकॉल करिए, अभी हमने 6 वर्कर्स के बारे में बात किया. हर वर्कर की एडिशनल यूटिलिटी क्या थी? 10, 12 सो एंड सो. और एडिशनल यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन. इसलिए हम एक और फॉर्मूला लगा रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं. TP refers to summation of MP, that is addition, sum total of the additional production by the additional workers. So these are the formulas. Move to the next. This is about average product. It is defined as the output per unit of a factor input or the average of the total product per unit of input and can be calculated by dividing the total product by the input. Suppose करिए there are 5 workers and total production is 100 units. What can you say about the average production? This is TP by L, means 100 by 5. This is 20 units. So what is average production? Average production means total product divided by units of variable input. Got it, beta? So what is AP? AP means TP by L, where TP means total production, L means units of variable factor. Now, these are important to note. These are the formulas. The very first, TP is the summation of MP, means total production is the sum total of additional production by additional units of variable factor. Then MP is equal to TPN minus TPN minus 1. अगर मैं ये कहूँ कि यूनिट्स ऑफ लेबर है मेरे 1, 2, 3 और टोटल प्रोडक्शन है मेरा, दिस इज
10, 15, 20. I want to find out MP. For the first unit, the addition in total production was 10. For the second unit, the addition in total production was 15 minus 10. पहले 10 था, अब 15 हो गया, मतलब एडिशन कितना हुआ है 5 का. कैसे फाइंड आउट किया? This 15 minus 10. This is TP2 minus TP1. TP2 minus TP1. It means TPN minus TPN minus 1. ये आ गया आपका 5. अब मुझे फिर आगे निकालना TP3 minus TP3 minus TP2. This is 20 minus 15. This is 5. So what we can say that MP can be calculated by using two formulas. One, MP is equal to TPN minus TPN minus 1. Number 2, MP is equal to change in output divided by change in input. Change in output divided by change in input. That is delta TP by delta L. Got it, beta? Then what is AP? AP means average product. This is per unit output produced by the variable factor. That's why TP by L. Got the concept? So there are four formulas. One, TP is equal to sigma MP. Second, MP is equal to TPN minus TPN minus 1. Number 3, MP is equal to change in TP divided by change in variable factor, change in units of variable factor. Then AP is equal to TP by L. Got the point? Move to the next. There is a question for practice. You are to complete this table by using all the formulas. This is 10. How can we calculate AP? TP by L. Write the formula. This is TP by L. So 10 by 1, this is 10. How can we calculate marginal? As we have discussed, for the first unit, TP and MP are equal. It is 10. Got it, beta? Next, for the second unit, total production is not there, but average production is there. We know AP is equal to TP by L. So what is TP? TP is equal to AP into L. This is 7.2. This is 2. So it is 15. Got it, beta? So how can we find out MP? This is TPN minus TPN minus 1. So 15 minus 10, it will be 5. So we can complete this table by using these formulas. So dear students, now it's your homework to go through the chapter thoroughly and do practice the tabular questions given in your book. Clear, beta? So stay home, stay safe, do your work properly. Goodbye, dear students. Have a wonderful day.